Welcome to another live session in Seek for Crick, and we discuss about in these live sessions about live cricket matches which are happening around the globe, and sometimes franchisee crickets as well. So, regarding the previous two games in Women's Premier League, RCB has defeated Mumbai in nail-biting contest in the final over of the match, with Nadine de Klerk become the safe rescuer for RCB and uh, she smashed 20 runs out of Ned Skyverbrand's final over and won the match for RCB. In the next game, MI versus Delhi, MI has completely outclassed Delhi. They have scored 180 plus, 190 plus total in the second T20I match, and Delhi was never meant to be in chase. They were bowled out for just 147, and at the end, Mumbai has won the game by more than 50 plus runs. So they are back into the uh, points. They have won their first match in this game. RCB and Mumbai Indians both have won their respective games, and currently they are in the points table with one win each. And it needs to be seen whether they can, like any team has the matter in their hands so that they can go ahead and defeat these two teams. So currently we are going to discuss about the India versus New Zealand game, the first ODI. India win. Uh, this is the second successive time actually Shubman Gill is captaining the side today, and he has won the toss against New Zealand, and he has asked them to bat first. New Zealand batters have got a good opening start. They have scored 117 runs. Both the openers scored 50s. Uh, and at one stage they were looking for more, looking for good total. They at that stage most of the people were saying that they could when reach 340, 350, when the par total in this ground is 280 according to the domestic cricket. What is happening in domestic cricket, this is the first men's international cricket game in Kotambi Stadium. We have seen in like women's international cricket happens here time to time, and this is the first men's international cricket match which is taking place right now. uh, New Zealand batting first has scored 300 runs, exact 300 runs we suffice. And there were three half centuries, both two were from the opening batters, Henry Nichols and Devon Conway, and then uh, again that ball guy Michelle, uh, Darren Mitchell has taken the game completely away from us, scored a fantastic 80 plus runs innings, and make sure that New Zealand have a decent total uh, on the board. When Indian bowlers, they should be, uh, they have done a commendable job to make a comeback in the match when they were looking down and out at the very start. Mohammad Siraj and Harshit bowled a good opening spell, but after that, it was all Devon Conway and Henry Rickles, and they have proved that they are one of the better batting unit uh, in these conditions. And at one stage, they were looking for like New Zealand were looking aiming for at least somewhere around 350 plus, but Indian bowlers have made a commendable job. They have made a good comeback and they have bowled out. Actually, not bowled out. They have restricted New Zealand for 300 for it largely. At one stage, New Zealand were struggling. They were losing wickets at a regular interval, but Darren Mitchell make it show that they reach a very good and decent total. Right now, the Indian chase also started on a decent note. Rohit Sharma started well with Shubman Gill, but Rohit Sharma, just when got his grooves in, he was dismissed. And then Shubman Gill and Virat Kohli played a huge part. They made a huge partnership. Just a few moments, a few overs before Shubman Gill was dismissed, but before that, he has scored a good 50. There was the issue with Shubman Gill's fitness once again. There was some back spasm. He was getting a massage, and just after that, he was got dismissed. And right now, Virat Kohli is playing on 71, and he's ably supporting by Shreyas, who scored 27 runs, and India is on 192 for 2, chasing 300. Looking good, set for a good chase, but still.
after 34 overs, there's a chance that bowlers will change the ball, and then the reverse swing will come into the play as well. So it's needed to be seen how it whether it will affect this chase or not. Currently, Virat Kohli has scored 28K international runs. He has just surpassed another Sri Lankan legend, Kumar Sangakkara, who has scored 28,000 runs before, and currently Virat Kohli is betting on something which is beyond that. So only one player is right now on the Mount Rushmore at the very top of Mount Everest of the scoring the runs is Sachin Tendulkar, who has scored 34,000 runs, and the legend will stay there for another, I believe, more than a decade, or more, even more, like it will take time before somebody might come and like remove him from there. But hardly any chances regard like the way the cricket is evolving, uh, like the way franchisee cricket is evolving, bilaterals are getting lesser and lesser. ODIs are not taking that. ODI series are not that longer anymore. So it needed to be seen whether we will get a player who will be playing all the formats of the game, like T20, Test, ODI, International. So currently Sachin Tendulkar's 34,000 is safe, but it's needed to be seen whether the 100 centuries record or the test record will be conquered or not, because Joe Root is looking well set to conquer that record. And other than that, we have Virat Kohli, who is looking adamant to score centuries, more and more centuries. So he's looking in good touch today as well. Uh, Looking good for one more century. So losing Indian fans will be thinking that uh, will be rejoicing the fact that Virat Kohli is still there. We still need 105 runs, 105 runs in 102 balls. Kohli is batting on 73 runs just in 74 balls. Shreyas is giving good support. New Zealand, basically, if I believe it can be said that they are lacking the bowling attack because most of their bowlers are youngsters. They are have a very injury plagued side and a very young side today. The only experienced bowler, considering the situation right now, is the lanky fellow. I forgot his name. He is still bowling. At the other end, other than that, there is one Darren Mitchell, but I think he won't be coming for ball. Glenn Phillips is bowling right now, but uh, both Kohli and Gill has somehow negated the effect of his. And I still don't understand how we don't play spin well in Test cricket. I think it's a completely different ball game, but we used to dominate spinners in Test cricket, in ODI cricket, but nowadays in Test cricket it is a completely different situation. I think will require a huge amount of time when we can actually come back and dominate the spinners once again. So currently the situation is that Kohli and Shreyas making it sure that India can go ahead and chase down this total. Uh, New Zealand are not looking down and out, but they don't have that experienced bowling lineup right now. So that is the reason why uh, India is currently in the favorites. But after three balls, I believe the game will become interesting because this is 33.3 overs, and after three balls, the ball will change. There is a chances that reverse swing might come into the play. So it needed to be seen whether it will affect the chase or not. But currently, Kohli, hats off to Kohli, his fitness and everything. He has scored a huge amount of runs in international cricket. 28,000 runs is not a joke, and everybody who is a fan of cricket definitely believes that their 28K is something which is not a joke. It's not a joke to play all the formats of the game and score on a continuous basis. What Virat Kohli has done over the years, and he's still doing it for Team India. So with another boundary has come while I was speaking, and India score has reached 203 for 2 after 33.4 or 5 overs. And just after this over, uh, the ball will change.
and Virat Kohli. What do I mate? Don't bring that kind of things here, and don't take the name of that other country, please. So, uh, you speaking in Hindi? Yes, I do not have any issues in speaking in Hindi, but I thought it will make another fact. Uh, ओके, आई विल ट्राई। मेरा हिंदी इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा अच्छा बोलने का। तो विराट कोहली ने आज हमेशा ही कमाल करते हैं, लेकिन एक ऑरा है बंदे का जो कभी मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता। मतलब इतना बेहतरीन प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे पास आया था। सेंचुरी, हाँ, सेंचुरी लोडिंग है पीयूष, बिल्कुल। यहाँ से विराट कोहली की कन्वर्शन जो अभी रिसेंट ईयर्स में हुई है, मतलब ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई सीरीज था उसके बाद कंप्लीटली उन्होंने काफ़ी बड़ा कन्वर्शन लाया है। पहले भी वो इतना अच्छे कन्वर्शन पे खेलते थे, लेकिन अभी स्टार्टिंग से बहुत अटैकिंग खेलते हैं। जैसे कि आज कमेंट्री में भी बोला जा रहा था, और कुछ लोग हैं जो डाउन करने में लगे हुए थे कुछ समय पहले इनको कि ये बहुत इजी फॉर्मेट खेल रहे हैं। अगर है तो इजी फॉर्मेट है तो है। विराट कोहली के लिए हर फॉर्मेट इजी है। बस वो टेस्ट में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका जो है एक इशू पकड़ लिया गया है, वो उसी जगह पे उनका नहीं हो पा रहा है। और वो भी अगर ओवरकम कर सकते थे अगर उनको टाइम मिलता। अनफॉर्चुनेटली वो टाइम उनको नहीं दिया गया। एंड विराट कोहली हैज़ मूव टू 84 राइट नाउ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा चेस कर रही है भारतीय क्रिकेट टीम। ऑफिशियल विराट कोहली ऑफिशियल फादर ऑफ न्यूजीलैंड, नो ब्रो। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा बोलना ये, क्योंकि फिर टेस्ट सीरीज़ याद आ जाएगी। याद मत दिलाओ वो सब चीज़ें। टेस्ट सीरीज़ याद मत दिलाओ। ओडीआई सीरीज़ हम लोग अच्छी तरह से जीत जाए चलेगा। टेस्ट सीरीज़ में हम लोग बहुत बुरी तरह से हारे थे, और न्यूजीलैंड में हमारा जो नेक्स्ट सीरीज़ होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जाके कुछ समय से हारते आ रहे हैं। लास्ट हम लोग कब जीते थे? लास्ट हम लोग जीते थे धोनी के कैप्टेंसी के अंदर, जब गौतम गंभीर ने लास्ट टेस्ट मैच में बेहतरीन पारी खेल के टीम टेस्ट मैच बचाई थी, जिताई थी। सॉरी, ड्रॉ कराया था मैच। तो गौतम गंभीर में भी एक समय एक बात थी, मतलब अभी पता नहीं क्या इशू है हो गया इस बंदे को, कुछ समझ में नहीं आता है। ही इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ प्लेयर, लेकिन जैसे कि एक कुछ समय पहले रिसेंटली एक इंटरव्यू में देख रहा था, इंडिया के जो एक समय फिट मेंटल प्रिपरेशन वाले पर्सन थे, पैडी अपटन। उन्होंने बताया कि थोड़ा गौतम गंभीर में थोड़ा इनसिक्योरिटी का इशू है। और ये एक ऐसे पर्सन से आ रहा था जो इंडियन क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ था, एक समय बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ था। तो एक ऐसे पर्सन की तरफ से ये बातें आना बहुत बड़ी बात होती है। So currently India is on 213 for 2. We are looking to chase down this total of 88 runs. 88 runs to win in 90 balls. 15 overs to go. 213 for 2 is the score. And we are hoping that we can pull off this chase right now. न्यूजीलैंड की तरफ से सिर्फ एक चीज़ उनको हॉन्ट कर रही है, उनकी बॉलिंग अटैक में वो टीथ नहीं है जो पहले होती थी। मैट हेनरी नहीं खेल रहे गेम इंजरी की वजह से ये, लेकिन जो जो इंजर्ड प्लेयर्स है, ये होप किया जा रहा है न्यूजीलैंड की तरफ से कि T20 सीरीज़ जब चालू होगी तो उस समय तक सभी अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी जो इशू चल रही है वो मेनली यही है कि और देखिए, मैं बात कर रहे थे और मिचेल आ गए बॉलिंग करने के लिए। ये बंदा कुछ अलग ही टाइप की क्रिकेट खेलता है इंडिया के अगेंस्ट। ही इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर वर्सेस इंडिया। ही परफॉर्म्स वेल अगेंस्ट इंडिया। पता नहीं इसको क्या चढ़ा रहता है इंडिया के अगेंस्ट में खेलने के लिए। जब भी आता है खेल के अच्छा खेल के चला जाता है हम लोग के अगेंस्ट। और वही प्रॉब्लम है ना, एक ये है और एक वो ट्रेविस हेड है। बहुत बढ़िया खेलते हैं लोग इंडिया के खिलाफ। ऐसे बहुत रेयर प्लेयर्स होते हैं जो इंडिया के खिलाफ कंटिन्यूसली अच्छा करते रहते हैं और पसंद भी आते हैं। एक ये बंदा है डेल मिचेल, जो बहुत पसंद आता है, अच्छा खेलता है। और एक है ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड का, अच्छी फील्डिंग करता है, बहुत बड़ी।
फील्डिंग के ज़रिए ही टीम को जिताने का पूरा प्रयास करता है। बॉलिंग में भी अच्छा बॉलिंग करता है, खतरनाक प्लेयर है ये डैरिल मिचेल और अपना ग्लेन फिलिप्स। तो अभी पार्टनरशिप हुई है 58 रन की 53 गेंदों में। 9 ओवर पहले ही शुभमन गिल का विकेट गिरा था, लेकिन कमी खली नहीं है इतनी। कोहली ने 23 रन बनाए हैं इस रन पार्टनरशिप में, 34 रन बनाए हैं श्रेयस अय्यर ने, और ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा ये करते हैं। यूट्यूब वर्सेस वो जी यूट्यूब वर्सेस इस ब्रांड का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यूट्यूब इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट इंटाइटी एट ऑल। और हॉटस्टार खेल प्रेमियों के लिए थोड़ा बहुत बोलना चाहिए कि हॉटस्टार खेल प्रेमियों के लिए इतना कुछ खास नहीं है। हाँ, उसमें बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन खेल प्रेमियों के लिए जो यूट्यूब है ना, वो हॉटस्टार नहीं बन सकता, क्योंकि यूट्यूब में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हॉटस्टार सब कुछ काबू में रखता है। अच्छा खासा सीरीज़ चलता है हॉटस्टार में, अच्छी खासी सीरीज़ चलती हैं, लेकिन हर कोई नहीं देख पाता वो चीज़। और फ्री में तो आप फ्री में यूट्यूब में भी नहीं है, लेकिन यूट्यूब फिर भी आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपने पसंद की चीज़ें देख सकते हो। हॉटस्टार में आपकी पसंद की चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन स्पोर्ट्स फैंस उसे इतना एंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी के पास उतने पैसे नहीं होते। खासकर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस, उन लोगों को तो बहुत कुछ चीज़ें पसंद है, और हॉटस्टार में वो चीज़ें अवेलेबल होने के बावजूद भी उस पर ऐसा रिस्ट्रिक्शन है। आप हाइलाइट्स देख सकते हो, लेकिन हाइलाइट्स देख के इतना मज़ा नहीं आता जितना लाइव देख के मज़ा आता है। और विराट कोहली मोस्ट रन्स इन ओडीआईज इन 7 इनिंग्स 464 रन है। मतलब ये रिसेंटली ओडीआईज में 464 रन 7 इनिंग्स में, 2 शतक है, 3 अर्धशतक है। ये बंदा अलग ही लेवल पे खेल रहा है। रोहित शर्मा 7 इनिंग्स में 374 रन बना चुके हैं, केएल राहुल 4 में 175 रन बना चुके हैं। तो ये एक मिशन पे है ये लोग अभी। इट इज़ ए वेरी नोन मिशन विच दे आर गोइंग आफ्टर, एंड होपफुली that mission will be accomplished as well. Both Rohit Sharma and Virat Kohli, if everything goes well, we will see them in 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप। और साउथ अफ्रीका में देखना ही है इन लोगों को, इन दोनों बंदों को देखना ही है, चाहे कोई और दिखे या ना दिखे, बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। और कंप्लीटली डिफरेंट साइड लगती है ओडीआई क्रिकेट टीम जब ये दोनों बंदे हैं। ये दोनों बंदे नहीं है तो बस स्मार्टली खेलते हैं ये दोनों बंदे, अपने हिसाब से खेलते हैं, लेकिन टीम को सोच के भी खेलते हैं, विच इज़ ए रेयर कॉम्बिनेशन। आजकल आप नहीं देख पाएंगे कि कोई बंदा टीम के लिए ज़्यादा खेल रहा है। कुछ कुछ बंदे इंडिविजुअल के लिए भी खेलते हैं। हाँ, बीच में वो जो माइलस्टोन की एक बात हो जाती है, वहाँ पे थोड़ा सेल्फिशनेस दिखता है, लेकिन वो कभी कभार इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है कभी कभी सेल्फिश होना। तो अच्छी खासी हम लोग चेस करें, 214 रन बन चुके हैं। इंडिया इज़ राइट नाउ ऑन द वर्ड, almost we have almost chased it down, but we have to wait till the final score line, क्योंकि गेम का जो मेन कंटेक्स्ट होता है, इस गेम का मेन कंटेक्स्ट ये है कि आखिरी गेंद तक मज़ा रहता है इस गेम में। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के गेम में हमेशा थोड़ा बहुत तो मज़ा रहता है। न्यूजीलैंड, हम लोग ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं। वी डिफीट ऑस्ट्रेलिया, वी कैन डिफीट इंग्लैंड, वी कैन डिफीट इवन नाउ डेज, वी कैन डिफीट इवन साउथ अफ्रीका। बट न्यूजीलैंड इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टीम। जब न्यूजीलैंड की बात आती है, पता नहीं क्या हो जाता है, हम लोग अच्छा कर ही नहीं पाते। अभी उनके घर में जाएंगे, वहाँ पे जाके वी हैव टू डू वेल, वी हैव टू डू वेल। वी हैव अ कम्प्लीटली यंग साइड देयर। थोड़े बहुत सीनियर्स हैं हम लोग के जो प्रीवियसली खेल चुके हैं, बट इट मोस्ट ऑफ देम विल बी प्लेइंग न्यूजीलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर जैसी हमने टीम सिलेक्शन की थी जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली है हमने, सो दैट इज that means we will be playing with lots of fresh guys in New Zealand, and that could be
that could be a negative thing as well, that could be end up as a positive thing as well. So hoping for the best there. Now the score is 220 for 2 और 36 ओवर्स के बाद 12 एक्स्ट्रास है। सभी ने आज ठीक ठाक स्टार्ट लिया है। रोहित शर्मा 26, गिल 56, विराट कोहली 89 नॉट आउट अभी भी है। श्रेयस अय्यर ने भी 37 रन बना दिए 32 बॉल्स पे। तो ये so this partnership might be able to pull this off without any more further damage. uh, Hoping for the best. 8 विकेट से जीते, 7 विकेट से जीते, 6 विकेट से जीते, इम्पोर्टेंट है इंडिया का जीतना. So let's hope that India win this game, and also hoping for another century from Virat Kohli. 100 के पास जाना है इनको, 100 के पास नहीं, 100 को पार भी करना है, तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट ही प्लेज वेल. हाय अजय. ये एक समय जेमिसन न्यूजीलैंड के बॉलर काफ़ी परेशान करते थे. कि काइल जेमिसन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप से पहले सबको याद रहा होगा, एक आरसीबी के लिए खेलते थे. तो इनको एक बार विराट कोहली ने कहा था, यू कैन यू बॉल मी विद रेड बॉल, यू कैन ऑल्सो शो क्रिकेट लाइव. हाँ, that can be done, but right now not. तो न्यूजीलैंड के जो मेन बॉलर्स है वो इस मैच में नहीं खेल रहे, जैसे कि जैकब डफी है, मैट हेनरी है. अभी ये लोग अवेलेबल नहीं है, इंजरी प्लेट साइड है, एंड इट्स अ कम्प्लीटली न्यू टीम विथ लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स. आज ही एक बंदे का डेब्यू भी हुआ है, and he played well with bat in hand. No, I'm not sure whether I will be able to do a live cricket on this. This is, I think, this is better because in this way I can read comments as well. It might be in future I might like to add that feature, uh, but for now the thing what I have this in control, so I would prefer this only. So to 80 to win from 83 balls, and Kohli moves to 90, and Shreyas Iyer is rightly supporting right now to Virat Kohli, playing the second fiddle, but most importantly he is also contributing in a proper manner so that India never should not feel any kind of pressure while chasing this. My channel is also cricket channel, brother. Good for you. Everybody should follow their passion. Everybody should become something which they like. क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लाइक करके उसके ऊपर चेस करते हो तो you get better results. Even if you don't get better results, you will be finding that you are doing something for yourself, for your worthwhile. So good for you. Another good shot, another very crafty shot by Shreyas Iyer, and that ends up in the boundary. And more Shreyas Iyer is making this chase a little bit simple and making it show that Virat Kohli doesn't feel any kind of pressure at the other end. He's already scored 42 runs in 35 balls, and in 80 balls we need another 75 runs to win this game. Thank you very much, Ajay. Thank you. Thank you for your subscription, buddy. I hope I can do justice for your subscription. Okay. India is in 226 for 2. Shreyas Iyer is trying his best to not give any kind of pressure back to Virat Kohli, and also making it sure that India is chasing this target in a healthy rate. Right now in 79 balls we require another 74 balls, so 74 runs. So things are little bit going little bit easy. So
let's hope it stays that way and we win this match, because with New Zealand you cannot you cannot compromise at anything. न्यूजीलैंड थोड़ी टफ टीम हो जाती है. आई थिंक दैट विल बी रेफर्ड. आई थिंक बॉल शॉर्ट बॉल की है फोक्स ने, और आप डीआरएस लेंगे कि नहीं? हाँ, डीआरएस ले लिया गया है. सो दैट्स अ गुड शॉर्ट बॉल बाय फोक्स. बहुत अच्छी, ये भी एक बहुत अच्छे बॉलर, उभरते बॉलर है न्यूजीलैंड के. uh, इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की थी. ये जो रिसेंट वेस्ट इंडीज़ का सीरीज़ गया है, वेस्ट उसमें वो न्यूजीलैंड की तरफ से इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी. और अभी कुछ यही बॉलर्स अवेलेबल हैं न्यूजीलैंड के पास करंटली, जो अभी परफॉर्मेंस दे पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि काफ़ी इंजरी प्लेग्ड साइड है न्यूजीलैंड की इस समय. So they are hoping that by the T20 World Cup they have a strong side. मिचेल सैंडनर जो कि कप्तान है T20 है क्रिकेट के, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं. There are certain teams who will be doing well in this T20 World Cup, and there are certain players who will be definitely making their uh, mark in this World Cup, which they were not able to do in previous World Cup. There are few names. I hope if, so it's a not out. It actually a DRS is against Virat Kohli, and a review lost of New Zealand. So India is currently placed rightly on 227 for 2. Virat Kohli moves to the 90s phase, and Shreyas Iyer playing well in has scored 42 runs. So hoping for the best that India will chase down this total. So, what do you guys think who are watching this? Will Virat Kohli be able to score these 100 centuries or and more than that? He's currently on, I think, 83, 84. So require another 16 or 17 odd like that. So whether he will be able to do that or not. Like the kind of matches he has the opportunity, but it will be very interesting if Virat Kohli hits century in every match. Is less likely that as well, like that, because scores will be less. Score might be less, like of the opposition team, or the team might not support Virat Kohli the way it should have, and it might end up in another manner for Virat Kohli. Or Virat Kohli doesn't have to come to bat, like from the top. Shubman Gill or Rohit Sharma plays in an innings of their lifetime and pull up the match. So that lots of things will come into the play, and let's hope Virat Kohli does not lose his form here and continue the form till the end of the World Cup 2027. Because that means another trophy will be coming in Indian trophy cabinet. This guy has already brought us many trophies. Uh, so let's hope he ends up with another trophy for the sake of nation. They moved to 228 for 2. Virat Kohli is on 1986 balls. 76 balls, 76 balls, 73 runs to win. And another single added. So Kohli moves to 91 in 87 balls. Uh, so the score right now we are chasing 71 in 74 balls. Kyle Jamieson is bowling right now, and he's the one who was playing for RCB at that point of time before the WTC final against India. So Virat Kohli asked him whether he can bowl him with red ball, but Kyle Jamieson told him right into the face that no, that would not be possible. So at the end it basically becomes very helpful for New Zealand, because they have won that WTC match, and Kyle Jamieson also performed well, but truly Team Southie has performed well in that WTC final as well. The whole of New Zealand has kind of performed in that World Test Championship final, and we have some selection issues as well, so that's why we have lost that WTC final as well.
and right now he's bowling in 120 Ks, but we lots of people know that that's not his ideal speed. He used to bowl in a much pacer manner, in a much better speed. So right now he's bowling uh, very slowly. I believe there was injury concerns, and due to injuries, he was also one of those bowlers who was in the reserve bench for a long time due to his injuries. So once a bowler gets injured, then it's very tough to make a comeback, especially in New Zealand. One of the prime New Zealand bowlers at once upon a time was Shane Bond. He was a uh, different beast altogether, but his injuries has taken the game away from him, and that's why we don't see him anymore. But we all the cricket fans do remember the kind of bowling action he has, the way he used to create pressure, and he used to dominate Australian cricket team at that point of time when nobody used to dominate them. Australia were bullies, but he was the one who used to avenge his side, and he was used to perform. They were literally uh, used to underperform against him, but uh, yes, sometimes Shane Bond has performed well against Australia and has done well, and that is the reason why most of the fans, those who love pace bowlers, definitely will feel the miss of Shane Bond. Then we have a person, a bowler like Sean Tate was there, who was a great pace bowler who has a different kind of bowling action. So it's 230 for 2 after 38.1 overs. Kohli is on 91 runs in 88 balls. India is 230 for 2. They are chasing 71 runs in 71 balls. So let's hope that this one does not become so interesting. It should be a very rather boring chase, and India should pull off this very easily. But uh, anything can happen in international cricket. And recently, I have saw a video in which a reel in which guy was talking about why pace cricket is so much pressure, because we have a tendency to go forward. We do not have a tendency to go backward and forward, something like that. So that's when you do pace bowling. So you create a pressure in your body. So like when you ball, you go front at the front side, so you go so front that your back side gets damaged. So back in your back you feel the pressure, in your toes you feel the pressure. So a pace bowler's life is very very dangerous, very harmful and very dangerous, but also you will find a lots of passionate pacers. Not nowadays, I don't think nowadays we will see so many passionate pacers. Like they will be bowling 4 or 5 overs in T20 cricket. T20 क्रिकेट में चांस मिल जिनको मिल जाता है, मेनली वो लोग ज़्यादातर 4 ओवर बॉलिंग करके खुश रहते हैं। तो ऐसे काफ़ी बॉलर्स हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे काफ़ी बॉलर्स हैं जो पैशनेट है, लेकिन सिर्फ 4 ओवर करने के लिए, और उनका बनता भी है, क्योंकि पेस बॉलिंग करना इतना आसान नहीं होता है। हर कोई पेस बॉलर नहीं बन सकता। इट्स अ वेरी रेयर ब्रीड। करंटली विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर बड़े ही कूलली एंड कामली स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया इज ऑन 233 फॉर 2 आफ्टर 39 overs. Kohli is on 92 runs. Shreyas Iyer is on 47. Uh, India should definitely go 1-0 up today, but let's see what will happen. In 11 overs after this, in the 66 balls, what will we be chasing? We will be chasing 67 runs uh, in next 66 balls. So it will become an interesting match after this. It will become a very interesting match. Has moved on to 93 after 90 balls. So let's hope that Virat Kohli hits another century today. India should win this match and go 1-0 up. And
Then we will talk about the next ODI match will take place after I think 2 to 3 days. This is a three-match ODI series, which is again very. This format is, people are saying this format is dying. I don't believe this format is dying, but we are giving T20I cricket a much more like chances because it's very easier to play, and it's a very shorter format. So hopefully we can understand that we can play ODI cricket of at least five match series. Oh dear, oh dear. Just while talking about Virat Kohli, and we have seen the dismissal of Virat Kohli, 93 runs in 91 balls, and this will create some sort of pressure in Indian camp. But hopefully, Shreyas Iyer will be able to chase down this total. India after 39.1 overs, 234 for 3. Kyle Jamieson again, he has hunted Virat Kohli's. He has dismissed Virat Kohli once again, and he is the one bowler who always haunts Virat Kohli. So yeah, but today Virat Kohli played another one of kind innings, almost won this game for us, almost closed this one, but unfortunately now we have to depend on other batters to go ahead and finish this stage for us. Hopefully we will be able to do that. So now it will become very interesting, but hopefully it will remain as a boring chase, and Shreyas Iyer and the other batter who will be coming out uh, will chase down this total, because we are also, I believe, we are also one batter short currently. Washington Sundar at the time of his bowling was uh, has injured himself, so it needs to be seen whether he will actually come out to bat. And right now, we have Ravindra Jadeja, which was most likely outcome of like after this wicket, because today we haven't we will not be able to see, might we will not be seeing Washington Sundar. I was like, after this KL Rahul will come uh, at the dismissal of the fourth wicket, who has played the role of wicket keeper today, wicket keeper batter. He is for Indian cricket team today in this match. So let's see whether we will be able to pull down this chase very easily, very comfortably, or there is a drama for us in the next 11 overs. And Ravindra Jadeja started with a block, and he just stroked the ball, but without like he's right now looking for his first run. Virat Kohli has scored 93 runs with 8 boundaries, 1 6, and a very calculated innings from him. He started well, aggressively, and that's why he has given 100 strike rate, amazing strike rate he has. And with Virat Kohli, you do not have to worry about strike rate. He might start slowly sometimes, but he make up for it in the latter part of the game. We are all aware about it. So it's right now three dot balls added to the total, with one wicket taking ball as well in this. So uh, let's see whether this over is in India's favor or not, because right now the new and the fresh batter is Ravindra Jadeja. So let's see. न्यूजीलैंड को अभी अभी एक नई आशा की किरण मिली है। अभी विराट कोहली को उन्होंने आउट किया है काइल जेमिसन ने, और 63 गेंदों में 67 रन चाहिए, और ये एक वाइड हुई है। सो रविंद्र जडेजा अभी भी अपना पहला रन खोज रहे हैं, लेकिन भारत को इस ओवर से अपना पहला रन मिल गया है। 235 पे पहुंच चुकी है भारत, और अब देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है ये खेल। 66 रन चाहिए अभी भी भारत को ये मैच जीतने के लिए, 235 पे 3 है। दूसरे एंड पे अभी हमारे साथ रविंद्र जडेजा के साथ श्रेयस अय्यर है, तो एक और अच्छे खासे सेट बैटर है, वो 47 रन बना के खेल रहे हैं। अर्लियर न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर ने, ओपनिंग बल्लेबाजों ने
बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने भी अच्छा कमबैक किया और एक समय काफ़ी अच्छे खासे प्रेशर में ही रखा था, लेकिन डैनियल मिचेल ने पॉसिबल किया है कि अ, न्यूजीलैंड 300 पे पहुँचे और उसके साथ एक डेब्यूटेंट जो नए बल्ले आज खेले हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की है आखिर के समय, जिससे न्यूजीलैंड इस 300 के आंकड़े को पार कर पाया। लेकिन गेंदबाजी में न्यूज़ीलैंड की जो इश्यू चल रही है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस गेंदबाज उनके पास नहीं है, वो शायद न्यूज़ीलैंड को हॉन्ट करेगी। अभी तक तो फ़िलहाल वो इतना कारगर साबित नहीं हुए हैं गेंदबाजी में, न्यूज़ीलैंड के जो नए गेंदबाज हैं। लेकिन फिनिशिंग ओवर में कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। और इसी बीच रवींद्र जडेजा ने ये शॉट आउट पुल लगाया है और 2 रन भाग लिए हैं और स्कोर हो गया है भारत का 237 पे 3। 39 ओवर में अभी भी एक बॉल बाकी है, 40 ओवर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद और भारत अभी भी इस चेज़ में बना हुआ है। 61 गेंदों में अभी भी 62 रन चाहिए, तो ये अभी भी एक चेज़ है जो भारत ईज़िली कर सकता है। बशर्त यही है कि जो अभी 2 सेट बल्लेबाज हैं, या तो वो पूरा गेम अभी खेलें या फिर ये गेम को और क्लोज़ लेके जाएँ। और अभी बात करिए थे, रवींद्र जडेजा भी आउट हो गए और अभी स्कोर हो चुका है 239 पे 4 और अभी आएंगे केएल राहुल। तो मैच हो चुका है इंटरेस्टिंग गाइस, जो नहीं चाहिए था। काइल जेमिसन ने इस मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है और अब मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता कि कैसे विकेट गिर रहा है यहाँ पे। मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है इस तरीके से। लेट्स होप दिस मैच विल एंड अप इन इंडियाज फेवर। सो थैंक यू वेरी मच इन एवरीबडी हु हैज़ लाइक दिस स्ट्रीम। और आप लोग ने जिन्होंने लाइक किया उसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, ताकि आप लोग के लिए और बेहतरीन कुछ लाया जा सके इसमें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल नाइट अहेड।